Hello students, now we are moving for the next topic, which is vertical circular motion, in short VCM. Vertical circular motion is an example of non-uniform circular motion. Now why? I hope it is very easy to understand, because जब कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो क्या होगा, जैसे ही वो ऊपर जाएगा उसका स्पीड डेफिनेटली डिक्रीज होने वाला है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी. ओके, एंड इट माइट हैपन कि वो गिर भी सकता है. ओके, बट वर्टिकल सर्कुलर मोशन अगर प्रॉपरली कंटिन्यू करना है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर नीचे की साइड एक कंटिन्यूस पुश देना पड़ेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. एक बार आपने पुश दिया, ठीक है, इट विल कम लाइक दिस. ओके, देन यू फॉरगॉट टू गिव द पुश. चलो एक और बार सर्कल कंप्लीट हो गया, देन अगेन यू डिडंट गिव द पुश, तो क्या होगा, इधर तक आएगा एंड डायरेक्टली इधर गिर जाएगा. ओके, सो एक स्ट्रिंग है, उसके नीचे एक ऑब्जेक्ट अटैच किया हुआ है, लाइक वी कॉल इट एज बॉब, and you have to continuously give some velocity over here. Okay, एक particular velocity maintain होना चाहिए ये पॉइंट पे, तो ही वो vertical circular motion में घूमता रहेगा. Okay, so that velocity is what we are going to find out the formula. मैंने लिखा हुआ है वो formula, velocity at b will come as √5rg. Plus at the same time a point पे भी velocity होना चाहिए. Okay, so that वो continuously यहाँ पर आ जाए नीचे तक. अदरवाइज क्या होगा, वेलोसिटी कुछ ज्यादा ही कम हो गया इधर, देन इट माइट हैपन कि वो इधर से नीचे गिर सकता है, सर्कल कंप्लीट करके नहीं आएगा, इट विल फॉल डायरेक्टली. ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ. ओके, नाउ वर्टिकल सर्कुलर मोशन वी हैव द इंटरेस्टिंग कांसेप्ट ऑफ टेंशन. ओके, बिकॉज़ जैसे ऑब्जेक्ट नीचे है ऑब्वियसली वो टेंशन में तो रहेगा ही. जैसे वो ये साइड आएगा ऑब्वियसली स्ट्रिंग स्ट्रेच होगा, टेंशन में रहेगा. जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगा तभी भी स्ट्रिंग में टेंशन होना जरूरी है. ओके, एंड अगर स्ट्रेच होगा तो ही वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा. अगर उसके पहले ही उसका टेंशन जीरो हो गया, ओके, ए पॉइंट से पहले ही अगर उसका टेंशन जीरो हो गया तो आप समझ जाओ कि वो ऑब्जेक्ट यहां तक पहुंचेगा, टेंशन हो गया जीरो, सो स्ट्रिंग क्या हो गया, स्लैक हो गया. ओके, टाइट नहीं है, इट हैज बिकम स्लैक. या प्रैक्टिकली भी ट्राई कर सकते हो, तो क्या होगा, इधर से ही वो ऑब्जेक्ट यहां पर ऐसे नीचे गिर जाएगा. ओके, सो टेंशन इज नेसेसरी एट ऑल द पॉइंट्स, ओके, इन द वर्टिकल सर्कुलर मोशन. सो लेट्स ड्रॉ सम फोर्सेस. ठीक है, फर्स्ट लेट्स टेक एट दिस बी पॉइंट, ऑब्जेक्ट बॉब का कुछ वेट होगा, सो दैट आई विल मार्क एज mg. ये पॉइंट पे भी वेट होगा acting downwards, mg. C and D points are almost similar, formula same ही आने वाला है, so मैं D point को अलग से एनालाइज नहीं कर रहा हूँ. A point इधर भी टेंशन ऐड करेगा, सॉरी वेट ऐड करेगा. ओके, दैट इज mg. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेंशन. कॉनिकल पेंडुलम के टॉपिक में मैंने आपको सिखाया है टेंशन इज ऑलवेज एक्टेड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. आई हैव टोल्ड यू टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर शो करना है, ठीक है, ऑन द अदर साइड. सो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है, okay, so tension will be shown away, okay, जहां से उसको खींचा जा रहा है. okay, so here the tension will be like this. object अगर इधर है तो tension it should be that side, this is the direction of tension. object अगर इधर है तो tension it should be away from the object, जहां से उसको पकड़ा गया. okay, वो साइड शो करना है इन शॉर्ट. okay, ऑब्जेक्ट से दूर एंड जहां से उसको होल्ड किया, that side you should show the tension. So this way we finally complete the diagram of vertical circular motion. अब करना है इसको analyze. ये हो गया हमारा tension A, this is B and this is C. अभी A point पे ऑब्जर्व करो, ये दोनों फोर्सेस जो है weight as well as tension, they both are acting towards the center. So यही कहीं ना कहीं centripetal force का काम कर रहा है. So I can write TA plus mg, this both together are acting like centripetal force, and centripetal force का फॉर्मूला हमको पता है mv square by r. ओके, यहाँ मैंने va लिखा है. Got this? Similarly, let's analyze for b point. b point में क्या हो रहा है, उधर भी तो centripetal force चाहिए, वो सेंटर की तरफ होगा, बट प्रॉब्लम ऐसा है कि there are two forces which are opposite in direction. ओके, सो डेफिनेटली एक नेट फोर्स तो होना चाहिए सेंटर की तरफ,
सेंट्रीपिटल फोर्स तो होना जरूरी है। तो इससे समझ में आता है कि टेंशन इन बी का वैल्यू ज्यादा ही होगा, करेक्ट और नॉट? अगर इसका वैल्यू ज्यादा है तो टीबी माइनस एमजी कुछ तो वैल्यू मिलेगा जो कि सेंटर की तरफ आएगा। अगर उल्टा होगा, समझ लो इसका वैल्यू कम है, वेट ज्यादा है, देन सेंट्रीपिटल फोर्स तो कट हो जाएगा, because this value is low, mg minus this, it will be removed. Okay, so that can never happen. So I can write tb minus mg, whatever answer you get, that is the centripetal force acting, mvb square divided by r. So these are the two equations. Now try to analyze. मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर टेंशन ए पॉइंट से पहुंचने के पहले जीरो हो गया तो क्या होगा? तो यहां से जो स्ट्रिंग है और बॉब है वो इधर से ही गिर जाएगा। ओके, सो सर्कुलर मोशन होने वाला है नहीं। सो टेंशन ये पॉइंट पे जीरो हुआ तो दैट विल गिव यू द मिनिमम स्पीड एट ए। वेलोसिटी एट ए अगर फाइंड करना है तो टेंशन यहां पर हम जीरो अज्यूम नहीं कर सकते, हमको इधर अज्यूम करना पड़ेगा तो ही मिनिमम मिलेगा। गॉट दिस? नाउ यू विल क्वेश्चन कि अगर इधर टेंशन जीरो हो गया, इधर अगर टेंशन जीरो हो गया तो बॉब तो इधर से नीचे गिर जाना चाहिए ए पॉइंट पे। नो, इतना ध्यान में रखो, थोड़ा इनर्शिया भी होता है बॉब का। सो अगर इधर टेंशन जीरो भी हो गया ये पॉइंट पे, एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो भी इनर्शिया की वजह से उसका सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। बट इधर अगर जीरो हो गया तो इनर्शिया इतना नहीं है कि वो पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। Got this? So we are going to find the minimum velocity at A by considering TA equal to 0. Okay? So ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। So we will be left with mg is equal to mva square divided by r. m got cancelled, ये r इधर मल्टीप्लाई होगा and I hope you understand, जैसे ही मैं स्क्वायर रूट लूंगा va square will give me square root of rg. So we got the first answer. ये हमारा मिनिमम वेलोसिटी है, याद रखो। अगर टेंशन यहाँ पर जीरो नहीं है, ज्यादा है, मोर, तो कोई टेंशन नहीं है, लेट मी टेल यू, तो इजीली सर्कुलर मोशन पॉसिबल है। दिस इज फॉर मिनिमम। ओके, चलो अभी नेक्स्ट पार्ट इधर ये सॉल्व करना है। ओके, अभी हमको VB का आंसर लाना है। सो टू गेट द आंसर ऑफ VB we are going to use the conservation of total energy law. Okay, so that law states energy remains same everywhere. Okay, energy is neither created nor destroyed. जो एनर्जी ये पॉइंट पे होगा वही एनर्जी आपको ये वाले पॉइंट पे भी मिलेगा, करेक्ट? सो आई विल राइट एनर्जी total energy at point A will be equal to total energy at point B. ठीक है? Now total energy में दो पार्ट होता है, you know that. One is kinetic energy, second is potential energy. Similarly, kinetic at B plus potential at B. अब पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है? हाइट का कॉन्सेप्ट आता है, करेक्ट? सो हमको एक डेटम लेवल सिलेक्ट करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल सिलेक्ट करना पड़ेगा जहां से हम हाइट मेजर कर सकते हैं। सो मैं बी पॉइंट पे ग्राउंड लेवल सिलेक्ट कर रहा हूं। व्हाट इज, इधर से सिर्फ हम हाइट मेजर कर रहे हैं, ऐसा मत समझो कि उधर ही ग्राउंड है एंड यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग, सर बॉब इधर आएगा तो फ्रिक्शन आएगा, स्पीड कम होता जाएगा एंड ऑल सच। प्लीज डोंट आस्क सच क्वेरीज। नाउ लेट्स राइट द फॉर्मूलास। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mva square plus mgh. सो h क्या होता है? यहां ग्राउंड से लेकर a पॉइंट का डिस्टेंस, करेक्ट? दिस इज द हाइट। सो आप ऑब्जर्व करो तो ये रेडियस होगा, दिस इज अगेन रेडियस, डायमीटर हो गया, सो आई कैन राइट 2r. सो h value over here is nothing but 2r. Similarly, kinetic energy for B, I will write half mvb square and potential energy B का वैल्यू क्या आएगा? 0, because हमने इसको 0 अज्यूम किया। ओके, ग्राउंड हाइट इज 0। बस अब इसको सॉल्व करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी, आप ऑब्जर्व कर सकते हो इधर m कॉमन निकलेगा, ठीक है? वो ये m के साथ कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है, VA का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सो VA स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, RG. ओके, सो माय नेक्स्ट स्टेप विल बी हाफ RG प्लस 2RG इज इक्वल टू हाफ VB स्क्वायर. गॉट दिस? अब ये पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो. सो व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस बाय 2, दिस इज गॉन, 2 2 जा 4, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 2 कैंसल, सो वी आर लेफ्ट विद VB स्क्वायर. आई होप यू अंडरस्टैंड. 4RG प्लस RG 5RG एंड उसका स्क्वायर रूट लेंगे, सो आई विल गेट VB is equal to under root 5RG. So this is how we get the minimum velocity. Again, let me tell you, this is the minimum velocity at point B, so that vertical circular motion is just completed. Okay. Similarly, हमको C part के लिए भी solve करना है. Okay. For solving C part, I'll just make some changes over here. ठीक है. So I will remove this A part and उसके बदले अभी मैं C लिख देता हूँ. Okay. Whatever changes are there, I'll just write those. I'll write C over here. Now इधर VC square आ जाएगा. Okay. These all things will remain same. हाँ, ये change हो जाएगा. आई होप आप ऑब्जर्व करो, सी पॉइंट पे ये हाइट आपका कितना रहेगा, इक्वल टू रेडियस. सो यहाँ पर सिर्फ रेडियस आएगा, हाफ एम वीबी स्क्वायर प्लस 0, दिस ऑल थिंग्स विल रिमेन सेम, मास कैंसिल हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल चेंज बिकॉज वीसी का वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसके पहले मैंने वीए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था, सो दिस नीड्स टू बी चेंज. सो लेट्स ऑब्जर्व, हाफ, पहले एक काम कर दे, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो. सो दिस विल गिव मी VC स्क्वायर प्लस 2RG, इधर भी 2 2 कट, सो आई विल गेट ओनली VB स्क्वायर. नाउ इट्स टाइम टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ VB. ठीक है, VB का वैल्यू ये आया था. ओके, सो उसका स्क्वायर करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 5RG आ जाएगा. सो आई विल राइट VC स्क्वायर प्लस 2RG इज इक्वल टू 5RG. I hope it is very easy. 5 minus 2, 3 and square root करूंगा. So I will get VC square is equal to 3RG. So that is how we get, also sorry, square root किया है. So VC is equal to square root of 3RG. This is how we get all the 3 minimum velocity, okay, at all these 3 points. This is called as top point, this is called as bottom point, and these points are called as mid points, midway points. Got this? So students, now we are going to derive this part. I hope you can see it is written TB minus TA is equal to 6 mg and TC minus TA is equal to 3 mg. So difference in tensions you are supposed to take. So ये दो equation I hope you have already understood in our previous part कैसे आया है. अब हमको क्या करना है, ये दोनों equation को subtract करना है. Simple. So subtract 1 from 2. This is our equation number 2 and this is 1. So let's write TB minus mg minus TA plus mg is equal to mvb square by r minus mva square divided by r. Okay. अब observe करो, TB minus TA, then ये माइनस हो जाएगा, so minus mg will give you minus 2 mg is equal to, अभी इधर बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सिंपल. I will write m upon r into VB का वैल्यू root 5RG, VB square will become 5RG minus m upon r, VA का वैल्यू हमने डिराइव किया है RG root RG, so square RG हो जाएगा. So simple values substitute किया, so R get cancelled, here also R get cancelled. So I am left with TB minus TA minus 2 mg. इधर अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये 5 mg है minus mg, that will give you 4 mg and it is very simple, plus 2 हो जाएगा उधर जाके, 4 plus 2 6. So that is how we get the answer as tension difference between top point and bottom point will give you 6 mg. Clear?
नेक्स्ट गो फॉर दिस वन नाउ. अब सी पॉइंट पे इक्वेशन क्या रहेगा? सी पॉइंट पे देखो, ये जो टेंशन है वो जा रहा है सेंटर की तरफ, ओके, एंड वेट तो डाउनवर्ड है. सो सी पॉइंट पे नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स सिर्फ ये टेंशन प्रोवाइड कर रहा है. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो आई विल राइट डायरेक्टली TC is equal to mv square by r. टेंशन एट सी इज द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3. अब ये लाना है तो क्या करेंगे? वी शुड सब्ट्रैक्ट दिस टू. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो आई नीड टू रब दिस ऑल. So subtract 3 from 1, or I should say 1 from 3. So TC minus TA plus mg is equal to mvc square by r minus mva square divided by r. So this way I will get TC minus TA minus mg. Again value substitute कर दो. VC square 3rg, we have derived that. So m divided by r into 3rg minus m divided by r. Vs square rg होता है. R got cancelled like this. So अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये 3mg minus mg. So 3 minus 1 2. Okay. So 2mg TC minus TA minus mg. So we got our final answer. 2 plus 1 will give you 3mg. Okay, so this is how we get both the answers. So students, vertical circular motion का एक last part बाकी है. In this, instead of string, हम लोग rod consider कर रहे थे. मतलब ये जो bob था, वो अब तक हम consider कर रहे थे कि string को attach है. But now consider rod, string नहीं है. Rod के end पे bob attach है. तो इसकी वजह से कोई चेंजेस आएगा? यस, डेफिनेटली चेंजेस आएगा, बिकॉज रॉड है, ओके, ऑलरेडी एक रिजिड पार्ट है. सो यहाँ पर टेंशन जीरो होने का सवाल ही नहीं उठता है. ओके, अगर समझ लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया एंड स्प्रिंग के केस में हम टेंशन जीरो कंसीडर करते थे तो यहाँ से वो गिर सकता था. बट रॉड है, रॉड के केस में तो कुछ होगा ही नहीं, यहाँ पर आने के बाद भी वो रिजिड ही रहेगा. सो इट विल डेफिनेटली कम डाउन. सो इसमें पॉइंट ए पे एक मिनिमम वेलोसिटी की जरूरत नहीं है, लाइक रूट आरजी नहीं चाहिए. इधर वेलोसिटी अगर जीरो भी रहेगा, बिकॉज ऑफ दैट रॉड रिजिड सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इट इज गोइंग टू परफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन. सो अगर इधर वेलोसिटी की जरूरत नहीं है तो थोड़ा वेलोसिटी डिक्रीज हो गया. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. तो यहाँ पर भी फिर वहां से नीचे आएगा तो यहाँ पर भी थोड़ा वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा. सो अकॉर्डिंगली रॉड के केस में velocity at B root 4 rg आएगा and velocity at C root 2 rg आएगा. and बहुत सिंपल है, ये 1 rg का डिफरेंस इसकी वजह से ही हुआ है, क्योंकि velocity at A root rg हुआ करता था. but still let's derive this so that it will give you another practice. okay, कैसे derive करना है? total energy at B is equal to total energy at A. total energy में kinetic आया plus potential, here also kinetic plus potential. okay, kinetic formula half m vb square, potential zero because हमने इसको डेटम अज्यूम किया है. ओके, इधर हाइट जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी आई टोल्ड यू रॉड के केस में यहाँ पर वेलोसिटी जीरो रहेगा तो भी चलेगा, नो नीड ऑफ रूट आरजी. सो इधर वेलोसिटी जीरो है, ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला mgh, तो यहां से हाइट कितना होगा? ऑब्वियसली डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, दैट इज 2r. ओके, सो दैट इज वेरी इजी, मास कैंसिल हो गया. ओके, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4. सो दैट इज हाउ वी गेट vb square is equal to 4 rg. vb can be written as root 4 rg, which is 2 root rg. Got this? I hope you understood this. Similarly, let's solve for C part. Total energy at D is equal to total energy at C. Okay, small c. So kinetic plus potential, kinetic का formula half m
Vp square plus potential will be 0. Datum level is equal to C का kinetic energy m half Vc square half m Vc square plus potential energy इधर क्या आएगा इधर का height r. This height is equal to the radius. Okay, so m g r. Got this? So पूरे equation को 2 से multiply कर दो. So that will give you m Vp square is equal to m Vc square plus 2 mgr. m कॉमन निकलेगा, so we can cancel out m also. ठीक है, Vb स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ओवर हियर 4rg आ जाएगा. So I will write 4rg is equal to Vc square plus 2rg. So 4 and this will get minus 4 minus 2 is 2. So Vc square is going to be 2rg. So that is how Vc का आंसर आपका √2rg. So that is all about vertical circular motion. Thank you.